I spent 24 hours with the doctor, and that's what I witnessed. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Basically, I'm a second professional MBBS student, and I don't know why 20th Feb को मुझे थोड़ी सी craving होने लगी ये जानने की कि how my life would look like after becoming a doctor. So I decided to drop a text to one of my favorite seniors. I told my mama I'm gonna make it and I meant that. And luckily she said yes. So I decided to sleep early ताकि morning में अच्छे से fresh होके उठ पाऊँ. 7:30 बजे के आसपास मेरे पास उनका कॉल आता है. She was like, hey Rakshita, meet me at मातृमा. मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया है. मातृमा हम लोगों की बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोग का है. I was very excited, so I rushed. So अभी मैं आ चुकी हूँ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में and दी के साथ हम अंदर जाने लगे हैं. I know it's going to be super awesome. And Dee came and asked me to wear the scrub, and we went inside. Already got one rolled up in my left hand. Pussy on my mind, tighter than a headband. Pressure in my lungs got. And here I witnessed approx 4 to 5 babies by cesarean. And this is Rakshita Singh. अपना थोबड़ा दिखा दो सबको. She's so gora and she has blush. Unluckily, one of the baby had Down syndrome. At around 12:30, दी भी थोड़ा बहुत फ्री हो गई उनके काम से. So she asked me कि चलो एक विजिट पे आपको लेके जाती हूँ. So we went for the visit and do you wanna see what I did? हाँ, very good. Fire deep in my soul. I'ma rise up like the legends of old. Brighter than gold, brighter than gold. Cute, no? So after this, we came back. They explained me about some of instruments over there. Safe practices to be performed. तो ऐसे डाउन सिंड्रोम्स को मतलब अवॉइड करने के लिए 2 बच्चे के बीच एटलीस्ट 3 इयर्स का गैप होना, मदर का एज ठीक ठाक होना, मदर का न्यूट्रिशन and all these factors matter. And then finally she completed her paperwork. Finally we had a tea break. Cheers. I came back to my hostel and she was still in the hospital doing her duty. She called me again at around 10 PM. उसके बाद हम लोग लेबर रूम में गए. वहाँ पे उनको कुछ डिलीवरीज में हेल्प करनी थी. Meanwhile, I was playing with the kids. There's fire deep in my soul. I'ma rise up like the That was the best ever day of mine. I know the duties are quite hectic. Life of a doctor is tough. You need to pass a hell lot of exams to be there. But trust me guys, that was nostalgic. Holding a baby, newborn baby in your hands. That satisfaction on people's face. It's literally a blessing. यार अगर पढ़ना है ना तो बस इस दिन के लिए पढ़ो. And whenever you feel like giving up, always remember, a broken wing simply means you need to find another way to fly. Just rock it. अच्छे से मेहनत करो, लग जाओ. So I hope you guys like the video. Make sure to like, subscribe, and also let me know in the comment section what's your motivation to become a doctor. And a special thanks to रोशनी दी इतना ज़्यादा support करने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं वो लाइफ जी पाऊँ अभी से. आई एम जस्ट इन लाइक सेकेंड ईयर. इनफैक्ट मेरे काफ़ी ज़्यादा बैचमेट्स भी चिढ़ गए कि और हमें भी जाना था. सो थैंक यू सो मच दी. टू ऑल द पीपल आउट देयर, अगर आप लोगों को रोशनी दी का यूट्यूब चैनल देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूँगी. ऑल्सो उनका इंस्टाग्राम का पेज का भी डाल दूँगी. वो बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते रहते हैं. गो चेकआउट. डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे. साथ में अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे. तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. राइट. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोइंग दिस मच लव. पर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के ज़रूर जाना आपको डॉक्टर क्यों बनना है, आपका क्या मोटिवेशन है. राइट. सो थैंक यू सो मच. बाय.